Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, firstly, I will give you the solution of your test paper, and after that, we will do the bookwork of our chapter, The Water Seed. So, you have to open your book and take your pencil. Okay, start now. First, complete these sentences with the simple past tense forms of the verbs in the brackets. Mother walked home quickly. What's the past form of walk? Walked. They dashed the big car. Push. What's the past form of push? Pushed. Okay. Write the opposite gender. Horse, mare. Uncle, aunt. Arrange the words in alphabetical order. What's the alphabetical order of key, knife, kitten, kangaroo? First letter is similar to all the words. So we will see the second letter E, N, I, A. Words come first A, then E, then I and then knife. So that's why firstly come kangaroo, then key, kitten and knife. Okay. Write the meaning of the following words. Look around to walk around a place and see what is there. एक place को walk around करना और देखना कि वहाँ क्या है. Okay. Now question answer. Write the answer of the following question. What made Sona feel hurt and sad? Sona felt hurt and sad when the other animal made fun of her. जब दूसरे animals ने उसका मजाक उड़ाया. And how she looked, कि वो कैसी लग रही है. What's that big hump on your back? Who said these words to whom? सोना को ये words किसने कहे थे? What's that big hump on your back? Monkey said this to Sona. Okay. Now this time to the bookwork of The Water Seeds. So open page number 94. C. Say true or not true. First, there was no water to drink because it had not rained for 3 years. वहाँ water नहीं था क्योंकि 3 years तक rain नहीं हुई थी. It's a true or not true? It's a true. So you will write here T. Start to write. Second, the fourth man came back to the village because he was tired. Fourth man वापिस आया था village से. No. 3 of them came back, but fourth man moved to the mountain. So it's a not true. Third, the old lady in the cave said there was no water on the mountain. Old lady ने क्या कहा था कि mountain पे water नहीं है? It's a not true. Fourth, the man put the snow in the sack and ran back to his village. मैन ने क्या किया था? सैक में स्नो डाल ली थी और विलेज की तरफ दौड़ा था. इट्स अ ट्रू. राइट हियर टी. फिफ्थ, देयर वॉज नो स्नो लेफ्ट इन द बैग बिकॉज इट हैड मेल्टेड. कोई स्नो नहीं थी बैग में क्योंकि मेल्ट हो गई थी. यस, इट्स ट्रू. सिक्स, द वाटर सीड ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री. जो वाटर सीड है वो ब्यूटीफुल ट्री में कन्वर्ट हुआ था. नॉट ट्रू. वाटर सीड किस में कन्वर्ट हुआ था? उसमें तो वाटर ग्राउंड बन गया था ना. सो इट्स अ नॉट ट्रू. स्टूडेंट्स कम हियर. नाउ योर वैल्यूज. द फोर्थ मैन वांटेड टू डू हिज जॉब वेल बिकॉज ही वांटेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन हिज विलेज. योर मदर हैड आस्क्ड यू टू फिनिश योर होमवर्क. यू वांट टू गो आउट एंड प्ले. योर फ्रेंड ऑल्सो वांट टू प्ले विद दैम. व्हाट विल यू डू? आपके फ्रेंड्स आपको खेलने के लिए बुला रहे हैं. मम्मा ने बोला होमवर्क करो, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्टली यू हैव टू डू योर होमवर्क. ओके. एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर प्ले. व्हेन समवन गिव्स अस सम वर्क टू डू वी शुड वर्क हार्ड एंड डू द बेस्ट वी कैन. जब कोई हमें कोई वर्क कर देता है ना, तो हमें उसे अच्छे से करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए. इफ़ वी वर्क वेल, यदि हम अच्छा वर्क करते हैं, the other person will be happy. दूसरे पर्सन खुश होंगे. This will make us feel happy too. और ये हमें भी खुश कर देगा. Okay. Now come to the grammar part.
Read this sentence. He wrapped it carefully in a sack. The word in color is ly word. They are called adverbs. An adverb tell us more about the verb. Adverb क्या होते हैं जो हमें verb के बारे में और बताते हैं. The word carefully tells us how the man wrapped the snow in the sack. जो word carefully है हमें क्या बता रहा है कि how the man कि man ने कैसे sack को snow को sack में wrap किया. We add ly to an adjective to make it an adverb. हम adjective के साथ ly लगाकर उसको adverb बनाते हैं. Sometimes the y changes to I when we add ly. जब हम ly लगाते हैं तो y हट के क्या बन जाता है I बन जाता है. ओके लाइक lazy plus ly lazily, busy plus ly busily, careful plus ly carefully, loud plus ly loudly. Okay, now it's time to exercise. Circle the adverbs in these sentences. Arjun speaks politely. Sia walks slowly. Slowlies are adverb. The children played happily. Happies are adverb. The sun shines brightly. Brightly is our adverb. Sonal writes neatly. Neatlies are adverb. The frog jumped quickly. Quicklies are adverb. So circle it. B part. Complete these sentences by adding ly to the words in the brackets. Tina sings sweetly. Sweet ly sweetly. Raj danced beautifully. The cat purred lazily. The skirt fits Meena nicely. It is raining heavily. Y है तो y हट के क्या लग जाएगा ly. लेजी में भी y है, y हट के क्या लग जाएगा ily. I hope students you have understood the concept of adverb. You have to complete your work also. Bye bye and have a nice day.